अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ टोफल स्टडी फॉर द बिगनर्स। इसमें हम आज लेसन 17 में स्टडी करेंगे प्रोनाउंस, इसकी डिफरेंट टाइप्स और उनको इन डेप्थ स्टडी करेंगे ईच वन ऑफ द टाइप्स को। सो लेट्स स्ट्रेट जंप इनटू द लेसन। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी 5 प्रोनाउंस की टाइप है इंग्लिश में। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन विच इज़ सब्जेक्ट प्रोनाउन, followed by complement pronouns which is also object pronouns. This will be followed by possessive pronouns, फिर possessive adjectives होते हैं and reflexive pronouns. हम हर एक को separately study करेंगे ताकि हम इनको uses clear हो जाए. So starting with the first one, subject pronouns occur in the subject position of the sentence or after the verb be. Be is, am, are, he, she, we, was, were, these are all be. So आपके पास जो subject है सब्जेक्ट पोजीशन हमने अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्टडी में लेसन फर्स्ट में स्टडी किया था। तो आपके पास जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं ये सब्जेक्ट की पोजीशन में भी आ सकते हैं और इट कैन कम आफ्टर द वर्ब बी। सो व्हाट आर दोज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउंस वी हैव? सो इट कैन बी सिंगुलर, कैन बी आई, यू, ही, शी एंड इट, and for the plural it can be we, you and they. In addition to the object already mentioned positions, also we can say that subject pronoun can also be used after the word then, as and that. So अब हम इसको study करते हैं examples के ज़रिए समझ के. First example is I am going to the store. I is a subject pronoun and in this sentence it is coming at the subject position. Is second example is we have lived here for 20 years. इधर जो we है this is a subject pronoun which comes at the subject position. Third example is I was she who called you. यहाँ पर after the verb be, was is a verb be, यहाँ पर जो she है this is also subject pronoun which comes after verb be. I is also a subject pronoun which is coming at the subject position in the sentence. Example 4 says she and I have seen this movie before. ये दोनों जो हैं ये subject pronouns हैं और इस subject position पे ही मौजूद हैं. George and I would like to leave now. These are two, the I here is a subject pronoun, George is a noun for sure because it's no particular name then. आपके पास this is subject position anyways. This example says we students are going to have a party. So we is a pronoun and again it comes at the subject position. एक चीज़ आप और नोट करें कि we, you and us can be followed directly by a noun. In the above sentences we students make it more clearly exactly who we refer to. आपके पास we, you and us हम directly भी यूज़ करते हैं by noun, by after noun. और इस एग्जाम्पल में जिसमें हमने कहा है कि वी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू हैव अ पार्टी, सो दिस वी इज़ इट सेल्फ एग्जैक्टली आपको रेफ़र कर रहा है कि हु आर वी रिफरिंग टू, वी आर रिफरिंग स्ट्रेट टू द स्टूडेंट्स. सेकेंड टाइप है कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउंस. कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउंस अगर इन द कॉम्प्लीमेंट पोजिशन. अगैन आप रिकॉल करें सेंटेंस स्ट्रक्चर को जो हमने स्टडी किया था जिसमें फर्स्ट पोजिशन आपकी सब्जेक्ट की होती है फॉलोड बाय वर्ब, then complement and a modifier comes. So complement pronoun आपकी complement position पे आता है in sentences whether they complement a verb or a position or a preposition. These are some of the list of the complement pronouns: me, you, him, her and it. These are all complement pronouns in singular. For the plural subjects it can be us, it can be you and them. You and it here are the same for the subjects or complement position. The others are different. अगर हम recall करें जो हमने be subject pronoun study किया उसमें me की जगह I था, him की जगह he, her की जगह she था, us की जगह we था, them की जगह अलग था. But in case of complement you and it are same, all the others are changed. So just for the sake of recall इसको हम एग्जाम्पल में स्टडी करते हैं. दे कॉल्ड अस ऑन द टेलीफोन. अब देखें ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट की पोजीशन है. दे कॉल्ड अस ऑन द टेलीफोन. द टीचर सब्जेक्ट गेव वर्ब हिम अ बैड ग्रेड. दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट पोजीशन ऑफ द सेंटेंस. John told her, which is referring to about a girl, her for a girl, a story. Again, this is a complement position. The policeman was looking for him.
यहाँ पर भी ये आपके पास आफ्टर preposition मौजूद है. For is a preposition, it's coming after preposition. To us, this is again after preposition. It seems like a good bargain. Mary is going to class with me. Again, this me is a preposition. This is a complement pronoun, which is coming after the preposition. So it's after preposition. Some more information about complement pronouns. However, remember that many prepositions can also function as other parts of a speech, like adverbs or conjunctions. Therefore, you must determine the part of the word from the context and not simply rely on your normal understanding of the word. To have a clarity, let's look into the example. Jane will make her presentation after him. Jane is subject, make is a verb. This is a modifier of her presentation. Again, after him, this is a preposition and this is a complement position. Jane will make her presentation after he finishes his speech. So this is a subject pronoun, is he finishes his speech, and this all complete the he finishes his speech makes the word clause. So if you have, this is a conjunction and this is a subject pronoun. We already studied the subject pronoun. It can be after the verb position, after helping verb, or it can be a subject position. Here आपका he finishes his speech, this is a subject pronoun and the whole word makes a clause. अब हम देख लेते हैं clause क्या चीज़ होती है. A clause contains a subject, which is here, and a verb. In the clause, he is the subject and finishes is the verb. He finishes. This is a subject, this is a verb, and always these two make a word clause to have additional information. थर्ड हमारी टैब हम स्टडी करते हैं विच इज़ पोजेसिव एडजेक्टिव्स. आई होप आप इस टाइम पे सब कुछ अपने पास रिकॉर्ड में भी अपनी नोटबुक में मेंशन कर रहे हैं ताकि आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए रिकॉल रहे. पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर नॉट द सेम एज पोजेसिव प्रोनाउंस. These simply modify rather than replace nouns. Possessive pronouns replaces nouns. जो आपके possessive adjectives होते हैं ये सिर्फ modify करते हैं, instead ये replace नहीं करते. Which is in case of the possessive pronouns वहाँ पे replacement होती है, लेकिन possessive adjectives में सिर्फ एक modification आती है. ये they do not replace the noun. Possessive forms indicate the ownership कि ये चीज़ किससे belong करती है. These are some of the possessive adjectives: my, your, his, her, and its, our, your, and their. एक और क्लैरिटी के लिए एक बात है कि देयर हम दो बार बात करते हैं. एक THERE देयर होता है, दैट इज़ रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक प्लेस. और अगर हम THEIR को लिखते हैं तो दैट मीन्स पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल वी आर रेफरिंग टू समवेयर एल्स इन प्लूरल. सो लिखने में हमेशा इसकी क्लैरिटी हमेशा होनी चाहिए. एक और आपको क्लैरिटी हो कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं दे आर यूज्ड टू रेफर द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी. लेट्स सी हम इसको एग्जांपल में कैसे समझते हैं. जॉन इज़ ईटिंग हिज डिनर. इट्स नॉट ओके, ठीक है. दिस इज़ नॉट माई बुक. आप अपनी पोजेशन बता रहे हैं कि ये बुक मेरी नहीं है या ये डिनर उसने किया है. द कैट हैज़ इंजर्ड इट्स फुट. ठीक है, इसमें आप ओनरशिप दिखा रहे हैं. द बॉय ब्रोक हिज आर्म येस्टरडे. शी फॉरगॉट हर होमवर्क दिस मॉर्निंग. माई फूड इज़ कोल्ड. माई फूड इज़ कोल्ड. It's not the same as its. It's means it is or it has. So जब आप its लिख रहे हैं इसका मतलब हरगिज़ IT और apostrophe s वाला नहीं है जो कि आपका शो करता है it is और it has. तो जब आप its लिखें तो इसका मतलब possession है, इसका मतलब ownership है, which is like this. और अगर आप इसमें apostrophe लगा देंगे तो it will have a meaning of it is food या it has food. So they will not go along. तो इसके लिखने में आप हमेशा clarity होनी चाहिए. फोर्थ हमारे पास है possessive pronouns. The possessive pronouns cannot precede a noun. Right? ये noun के बाद नहीं आ सकते. They are pronouns and thus they replace the nouns. If you are writing them तो आपने noun को replace कर दिया है. ठीक है. इससे पहले हमने possessive adjectives के बारे में study किया था कि ये modify करते हैं nouns को but they don't replace. But in case of possessive pronouns they do replace the noun.
The noun is understood from the context and is not repeated. हमको चूँकि मालूम हो जाता है सब कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करके कि व्हाट इज़ नाउन, तो हम रिपीट नहीं करते, हम सिर्फ वहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन मेंशन कर देते हैं. These are the some of the list of the possessive pronouns: mine, yours, his, her and its, ours, yours, theirs. Mine means my plus जो भी noun है, for example my book. Yours means your plus noun, which means for example your pen. Hers means her plus noun, means for example her dress और उसका dress. And her is used for the feminine. इसकी एग्जाम्पल्स को स्टडी करके हम क्लैरिटी करते हैं. द क्वेश्चन एग्जाम्पल फर्स्ट सेज दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माइन. आपने माइन कह दिया, दैट मेक्स दिस सेंस क्लियर. एग्जाम्पल 2, योर टीचर इज़ द सेम एज हिज टीचर, योर्स इज़ द सेम एज हिज. तो आपने जब योर्स कह दिया तो उसके बाद आपने योर टीचर इज़ क्लियर. अब आपको दोबारा टीचर का वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट रिप्लेस्ड इट विद द वर्ड योर्स. Her dress is green and my dress is red. Hers is green, mine is red. तो अब आपने word dress को omit कर दिया because sentence से clear हो गया कि are you referring to a dress of someone. Our books are heavy, ours are heavy. तो जब आपने बता दिया books, आपने यहाँ पे omit कर दिया, तो आपने ours से clear कर दिया कि आप यहाँ पे book के बारे में refer कर रहे हैं. Their coats are too small, theirs are too small. तो अब आपने यहाँ पे theirs बताकर यहाँ पे दोबारा आपने कोट रिप्लेस को वर्ड दोबारा से मेंशन नहीं किया, रिपीट नहीं किया. I forgot my homework, I forgot mine. So जब आपने forgot mine कह दिया तो mine is referring कि you are talking about your homework. The last type is reflexive pronoun. These pronouns usually follow the verb. They come after verb. It indicates that the subject is both giving and receiving the action. These are some of the list of the reflexive pronouns: myself, yourself, himself, herself and itself. Ourselves, अब यहाँ पे आप देखें प्लूरल है तो यहाँ पे इस सेल्फ की जो स्पेलिंग है वो चेंज हो जाएगी, जस्ट टू हैव अंडरस्टैंडिंग कि आपने लिखने में क्या एहतियात करनी है. yourselves and themselves. आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जब प्लूरल में हमने पहले स्टडी किया तो इट वॉज देयर, बट जब आप इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मेंशन करेंगे तो इट विल बी themselves. You never will write their selves. In the plural, the self changes to selves, which is here. Most forms are made by adding the suffix to the possessive adjective. However, in case of himself, itself and themselves, they are adding to the suffix. They are adding the suffix to the complement form. The forms his self and their selves are always incorrect. So it will be himself, it will be themselves, and not his self or their selves. These are some of the examples to have clarity. First, John bought him a new car. Him is another person. ठीक है, this is not about John himself, it's someone else. John bought himself a new car. यहाँ पे himself is referring कि John has bought car for himself. So himself means John himself. I watched myself, rightly so. He sent the letter to himself, so it's about him. She served herself in the cafeteria. There is nobody else with her, she's doing herself. We hurt ourselves playing football. हमने किसी और को hurt नहीं किया, हमने अपने आप को ही hurt किया है. They were talking among themselves. It's not somebody from outside, it is they are talking about talking to each other. You can see the difference for yourselves. आप अपने ही अंदर आपसे बात हो रही है, कोई बाहर से involvement नहीं है. Further clarity, the reflexive pronouns can also be used for emphasis. Right? इस वक्त तो हमने सिर्फ स्टडी किया कि आपने it comes after verbs and what it does show, but it can be used for the emphasis purposes as well. This means that the subject did the action alone. In that case, it normally follows the subject. I myself believe that the proposal is good. जब आपने इसको subject की बात लिखा है तो आप इसको reinforce कर रहे हैं, emphasize कर रहे हैं कि you are the one who did it all by yourself. Your action is all by yourself alone. He himself set out to break the long distance flying record. So जब आप emphasis show कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि action subject ने ही अकेले किया है तो in that way आप इसको subject के बाद लिख लें reflexive pronouns को. She prepared the 9-course meal herself. The students themselves decorated the room. You yourself must do this homework. John himself bought these gifts. So आपको ये emphasis होना चाहिए कि आप इस पे किस बारे में बात कर रहे हैं.
इसके बारे में एक और चीज़ आप स्टडी करेंगे, बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन ऑल्सो मीन्स अलोन। अगर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के से पहले बाय वर्ड यूज़ कर लिया तो आप इसमें रीइंफोर्स कर रहे हैं कि ये आपका अपना ही अकेले का ही एक्शन है। जॉन वॉश द डिशेस बाय हिमसेल्फ और जॉन वॉश द डिशेस अलोन, दे बोथ मीन्स द सेम। अगर आप बाय हिमसेल्फ लिख दें इसका मतलब भी अलोन है, और अगर आप अलोन ही लिख दें तो इट ऑल्सो मेक्स सेंस। तो जब हम पोजेसिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ बाय वर्ड ऐड कर देते हैं तो उसका मतलब अलोन ही होता है। अब हम स्टडी करेंगे प्रोनाउन की एक्सरसाइज। अब अभी हम तमाम प्रोनाउन के टाइप स्टडी कर लिए, हम एक बार एक्सरसाइज को गो थ्रू करेंगे तो हमारे तमाम कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। सो ये हमारे पास कुछ 20 क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को इस पॉइंट पर पॉज करें और आपके जितने भी आंसर्स हैं उनको अपने पास नोट डाउन कर लें, फिर हम इसके आंसर्स को स्टडी भी करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने जितने भी नोट्स आपके पास सामने हैं उनको देखें और जिस तरीके से आपको इंस्टिंक्टिवली समझ आ रहा है उनको मार्क करें और फिर हम इसके आंसर्स को स्टडी करते हैं। इस वीडियो पे इस स्लाइड में हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं। आई होप आपने इनको पॉज करके देख लिया है। वी हैव 10 मोर क्वेश्चंस ऑन दिस स्लाइड। मैं इस पर पॉज करती हूँ, आप इसके आंसर्स को भी एक बार नोट डाउन कर लें और उसके बाद फिर हम वी विल डिस्कस ईच वन ऑफ देम सेपरेटली। जिसमें हमें क्लैरिटी नहीं होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इनको नोट डाउन कर लिया है। फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी डन देयर आंसर मेंशन देयर आंसर्स इन द बुक्स, उनके लिए हम अब अपना लेसन स्टार्ट करते हैं आंसर्स। सो वी वर सपोज टू फिल दीज विद ईदर प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स प्रोनाउंस। सो here we are. The question 1 was, I go to the school with he or him every day. So इसमें हम आपको बता रहे हैं कि we already have a subject in the sentence, so it's about with whom are we going, right? It's about this reflexive, right? It's about who we are going along. So in that case the answer is him. The second question is, I see her, she or herself at the union every Friday. So it's about her. I see her at the union because it's about another pronoun you're talking about. The question 3 is, she speaks to we, us or ourselves every morning. So she speaks to someone, the plural others. So in that case it is going to be us. Question 4 is, not she a nice person. So इसमें आप उसको as a pronoun mention कर रहे हैं, so it's not about the possession. So as a result आप इसमें her का लफ्ज़ mention नहीं करेंगे, it's about isn't she. Then comes question 5 which says he or him is going to New York on vacation. So it's not about him, it's about he is going to New York on vacations. Question 6, she or her and John give the money to the boy. It's about she and John. It's about her and John, not. It's about she. So she and John give the money to the boy. Question 7, your record is scratched and mine is too. अब आपने यहाँ mine इसलिए mention कर दिया क्योंकि आपने record which is noun आपने उसको repeat नहीं किया, which is understood here कि mine means आपका भी record. So you are just replacing it with the word record, with the word mine actually. Question 8, I hurt the leg. So you hurt your leg, right? और just अगर आप इससे पहले अगर आपके पास कोई नाउन मेंशन होता है जिसको आप रिप्लेस कर रहे होते तो यू जस्ट कुड हैव सेड आई हैड माइन टू, बट यहाँ पर चूँकि देयर इज़ नो अदर सब्जेक्ट तो आपने मेंशन करना है कि आपने अपनी लेग को हर्ट किया है. क्वेश्चन 9, जॉन बॉट himself, herself or hisself a new coat. Hisself is not a right word at all. So the left are himself and herself. John is a boy, supposedly. So it is going to be himself a new coat. Question 10 says, we or us girls are going camping over the weekend. So it's about we girls because it's a simple subject pronouns. It's not about any possession which is like us for that matter. So it's going to be straight we girls are going. यहाँ पे इसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं. क्वेश्चन 11, मिस्टर जोन्स कट हिमसेल्फ और हिससेल्फ ड्यूरिंग शेविंग. अगैन फॉर reinforce, हिससेल्फ इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड एट whatsoever. It is going to be himself. Question 12, we like our or ours new car very much. So यहाँ पे आप कार अपनी कार का बता रहे हैं which is a possession of yours. So it's just ours. It's we, so it will be ours. The dog bit she on or her on the leg. So the dog bit her on the leg. It's about that the leg which belongs to that girl, right? Question 14, John
he or himself went to the meeting. John चूँकि खुद ने the action was conducted by John himself, all by alone, so it is going to be himself. कि आप बता रहे हैं कि action करने वाला subject is John. Question 15, you will stick your or yourself with the pins of you are not careful. So it's about कि आप जो stick कर रहे हैं जिसके बारे में बात हो रही है, that is you yourself. So as a result आप इसको reinforce कर रहे हैं with the word yourself. As a result you're mentioning here yourself. Question 16, Mary and I would rather go to the movies. It's about Mary and I. It's going to be simple pronouns. It is nothing else. Everyone has to do their or his own research. Everyone is the same as singular subject. As a result, आंसर इसमें जो पोजेशन का आएगा वो भी सिंपल हिज का आएगा. इट विल नॉट बी देयर बिकॉज इट्स नॉट प्लूरल, इट्स सिंपल सिंगुलर. आप हैज से भी देख सकते हैं. क्वेश्चन 18, जस्ट बिटवीन यू एंड मी आई डोंट लाइक दिस फूड. सो इसमें आपने सिंपल मी ऑप्शन यूज होगा बिकॉज द सब्जेक्ट इज ऑलरेडी देयर. जस्ट you and me, you and me. Question 19, Monday is a holiday for us teachers. So it's about we all talking about each other. So the question 20 is her car does not go as fast, because यहाँ पे car आपने mention कर दिया तो simple subject pronoun. But in the later case you are saying नॉट गो एज फास्ट एज आवर्स. तो आपने आवर्स इसलिए मेंशन किया बिकॉज अब आपने कार जो नाउन था उसको आपने ओमिट कर दिया है, आपने उसको रिप्लेस किया है विद योर आवर्स. सो एज अ रिजल्ट अब आप मेंशन नहीं कर रहे कार, आपने इसको रिप्लेस कर दिया है. एंड आवर्स शो कि यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर ओन कार. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑल द एक्सरसाइज फॉर रिगार्डिंग प्रोनाउंस. If you have any questions left, kindly let me know in the comment section below. If you like it, subscribe my channel, like and share with your friends. Thank you.